Hello and welcome to another episode of Stong. Joining me on today's episode is my friend Anshuman and Naveed. So let's just jump into the episode. आई फील कि आज का जो वीडियो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग्स वीडियो होगा क्योंकि उसमें 3-4 ऐसे न्यूज पीसेस है जो हम सबको इम्पैक्ट करने वाला है, हम तीनों को और ऑडियंस को भी। हमारे अभी करंट इन्वेस्टमेंट में न्यूज है, हमारे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पे न्यूज है, और बिकॉज आज मार्च, अभी हम मार्च में है एंड इट्स बीन एग्जैक्टली अ ईयर सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड एंड तब से मार्केट बहुत बड़ा है। तो आज के एंड में वी हैव अ स्पेशल सेगमेंट, top 5 stocks which gave the highest returns in the last 1 year. So firstly, recently last 2-3 महीने से बात चल रही crypto might be banned in India, right? And recently there was some clarity. Whilst we are very clear that the Reserve Bank may take a call on an official cryptocurrency or anything of that kind, but from our side, we are very clear that we are not shutting all options off. We will allow a certain amount of a window for people to use, so that experiments in the blockchain, the Bitcoin or whatever you may want to call it, the cryptocurrency experiments and fintech which depend on such experiments will have that window available for them. We are not going to shut it off all. पहली बात तो ये है अंशुमन, for anybody who has seen my Bitcoin video, please go and see it, link in the description. उनको पता है कि जब भी मैं क्रिप्टो एंथुसियास्ट से बात करता हूँ, एक ही सवाल पे आके रुक जाता है कि आप क्रिप्टो बैन कैसे करोगे, क्योंकि वो तो ब्लॉकचेन पे आप लेजर में आपका नाम जा चुका है ना, विच इज द होल पॉइंट ऑफ ब्लॉकचेन इज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। तो उसको बैन कैसे, how will you do it? Anyway, so, this is another video for another day. I'm just asking. So, but this is not the first time when the government of India has banned cryptocurrency. 2018 or 2019 maybe, the government banned the trading of cryptocurrency. You can't use INR to purchase crypto through exchanges that are in India. But there are decentralized exchanges that exist around the world which are widely used. You can still buy crypto, if not through the state machinery. That's it. It's not just her, but someone who was on the committee that drafted the initial bill that requested the ban also used the term crypto assets. We should not, maybe not consider it as SC Garg, I think his name is. Maybe we should not consider it as a currency, but I think we should think about it as an asset. So the signs exist that maybe they might not go ahead with the complete ban, but it's very positive that they're looking at it from an open mind, saying we should get the best from this technology. So kudos to the finance minister. SpiceJet is offering COVID tests for just $300 just to get new passengers on board. Oh, interesting. सब अपना अपना खेल खेल रहे इस जमाने में गुजारा चलाने का. So all the best. If this works for them, why the fuck not? I mean, yeah, I would take if I can eat that same chutney sandwich or chicken mayo sandwich in that airline for the last decade, I think you can take a COVID test. And this is not the only innovative offering by an airline company. बहुत सारी companies try कर रही है. Like Australia में Qantas कुछ भी होगा. Qantas. हाँ, Qantas Airways है. They started offering कि एंटार्क्टिका के ऊपर से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप थोड़ा ऊपर घूमो, उधर पार्टी कर लो और वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाओ. Nice. मतलब इट्स लाइक योर वेकेशन इज की फ्लाइट में घूमने जा रहे हो. नाइस. और वो लोग का ये करते करते विजय माल्या उनको सू करेगा और बोलेगा यही तो किंगफिशर था. दिस इज व्हाट आई बिल्ट. हमें में पार्टी करो, यही तो मैंने सपना बेचा था जनता को. So Rakesh Jhunjhunwala's firm applies for a mutual fund license. Alchemy Capital Management बोल के उसकी कंपनी है. He has recently applied for a mutual fund license. And अभी recently SEBI का रिपोर्ट आया जिससे ये सब पता चला. There are a few interesting companies which have also applied for a mutual fund license. एक तो Alchemy तो हो गया. Bajaj Finserv, it's an NBFC. They have also applied for a mutual fund license. There's Unify Frontline. And the most interesting one here is Zerodha. Zerodha has also applied for their mutual fund license. Damn. And if you look at the entire company's trajectory,
इट हैज ऑलवेज कि डिसरप्ट करो, जहां जहां बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है कस्टमर का हाँ करने की कोशिश करो. हम्म एंड डेवलप्ड कंट्रीज में इंडेक्स फंड्स हैव बिकम टू बिग. मतलब म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेजमेंट फंड्स आर नॉट सो बिग एनीमोर इन डेवलप्ड वर्ल्ड्स. आई थिंक Zerodha कैन आल्सो बी दैट AMC जो सिर्फ इंडेक्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स लाए और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दे. 4G services to improve after recent auction. Fourth generation airwaves connected by Government of India concluded in the first week of March. अच्छा. कौन जीता? जीतना तो एक ही है, जियो वन. Oh. जियो, so it's not winning, it's like bid कर करके जीत. हाँ, तो 3/4 of the total airwaves जितने भी खरीदे गए, जियो won it, जियो bought it. Got it. And secondly, it's ऐसा भी नहीं है कि Airtel और Vodafone had the option to buy as much as Jio could, because उनका tax liability बहुत ज्यादा है, उनके revenues are bleeding, so they couldn't buy a lot. But ऐसे टाइम पे भी, मतलब लास्ट एक साल बहुत खराब था इनकम for most of the businesses. उसके टाइम पे भी the government was able to sell airwaves of almost 78,000 crores. फक हवा बेच दिया यार नवीद. 80,000 करोड़ के लिए हवा बिक गया. नवीद सुनाई दिया क्या? क्यों चलती है पवन. All right. So firstly, Anupam Rasayan opened for subscription on 12th March. Nice. Who is Anupam? तो अनुपम रसायन बेसिकली इज अ केमिकल कंपनी. वो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग और कॉटन सिंथेसिस वगैरह का देखता है. Okay. या एंड इट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन फ्राइडे हाँ. एंड 2 दिन बाद बंद होने वाला है ट्यूसडे को. एंड पहले दिन इट गॉट सब्सक्राइब बाय 1.22 टाइम्स. सेकेंडली नजारा टेक्नोलॉजी बोल के कंपनी है. उनका IPO आ रहा है. हाँ, Oh, Nazara Technology is like a very popular, like a gaming. They're into gaming and media. छोटा भीम वगैरह बनाते हैं. छोटा भीम एंड ऑल दीज मोबाइल गेम्स. Oh, nice. Cool. And this company is also backed by Rakesh Jhunjhunwala. Almost 11% of the company is owned by Rakesh Jhunjhunwala. Oh, interesting. Yeah, Cool. yeah. और ये कंपनी के मैंने अभी गेम्स देखना, मोबाइल गेम्स, a lot of games were popular back in the day. अभी तो मैं नहीं खेलता इतना गेम्स, but were popular when I used to, play mobile games. तो हाँ, काफी सही, exciting है ये चीज. All right. बताओ 5 best performing stocks of the last 1 year. Number 5 से शुरू करते हैं. कौन सा स्टॉक है? पहले तो आप any guesses कि एक कोई कंपनी which you think will definitely be there? One of the pharma companies should be there, no? Adani will be there. I know one of the Adani stocks is going to be in the top 5. First is Hindalco Industries, 175%. And this is from March 13, 2020 to March 12, 2020. फिर there's this Motherson Sumi एक Systems. मिनट, मेरे पोर्टफोलियो में हिंडाल्को है क्या अंशुमन? थोड़ा सा हल्का सा है. तो मुझे कुछ मिला नहीं इसमें से. इसमें से नहीं मिला है. Third is Tata Motors. It has had an insane rally. Actually, Tata Motors March में around 70-80 के बीच मिल रहा था. And now it's at around 300-322. Oh, mad. Damn. And this is a big company, right? ऐसी भी company, this company everyone knows about. Yeah. इसके प्रोडक्ट सबने देखे हैं. And such a company making such a stellar rally in just 1 year. But is makes something sense, which- right? Like demand for cars would have gone up post COVID. Tata is देश की गाड़ी है. They're cheap, they're reliable. It makes sense also. Second one is Adani Transmission. Wow, Adani Transmissions 372%. Basically अगर मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पोर्टफोलियो में है क्या अदानी ट्रांसमिशन? है तो मेरे को पता है. हल्का सा, हाँ हल्का सा है. सब कुछ हल्का सा ही है. सब कुछ हल्का सा ही है. I am noob. The winner of this challenge वो लास्ट ईयर 100 रुपए में था. आप बस गैस करो दोनों में से, आप दोनों गैस करो अभी क्या है, क्या लेवल पे? 600 रुपया. हाँ 600 रुपया. 600 तन में. ओके, आपका क्या गैस है? वो 450. 450. ओके. एंड हाँ, ये है कि whoever is closest to this, ठीक है, 50 points if you are जो closest है, and if you are 50 rupees close to the actual answer, whoever then is I'll give closest. हाँ, then I'll give you 1 share for free. Okay. Okay. Please reimburse. ठीक है. Please Thank you for your 600 rupees. Okay. It's 1158 Oh rupees. my Whoa. God. Adani Green. Oh Adani my Green. God. Adani Green भी है मेरे पोर्टफोलियो में, है ना? है. हाँ. डाला अब है. कितना है? हल्का है. Wow. हल्का है.
हल्का ही है. अरे यार It was at 100. Yeah, It went 10 120. times. Yeah. God. that's crazy. Wow. Yet the Return figure screenshot is- that Anshuman has taken is कि 2% गिरा है. Answer is 833% in the last 1 year. Wow. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. मतलब इस अदानी के ग्रोथ के वजह से a lot of things have changed. बहुत बड़ी न्यूज आई है, which Of course. is Yeah. Gautam Adani Ah, saw of the course. biggest Of surge course. Yeah. in his net worth. This was. Nice. This is why. This, yeah. We've been In the seeing this beginning news. of 2021, his net worth was 16 billion. अच्छा है, कम नहीं है, manageable. Lame. चल जाएगा. That's lame. हाँ. हाँ. Yesterday it was 50 billion. The richest man of Asia, Mukesh Ambani, उसका net worth सिर्फ 8 billion से बड़ा. Oh, that's of it. course, see, हाँ, he ठीक है. defeated him. Look, so that's it's fine. been a tough 3 months. Okay, ठीक है. Yeah. And the reason is most of the Adani stocks have rallied at least 50% this year. So there's a जिसका graph मैं graph जिसका दिखा दूंगा. हल्का हल्का बेनिफिट हमें हुआ है. हाँ, हल्का हल्का. Yes. Hmm. And this has made him the biggest wealth gainer. He has beaten Elon Musk and Jeff Bezos in the last 3 months. उसका सबसे बड़ा growth हुआ है. These are the companies, पूरा उसका roster of Adani Group. Most of these companies have made a lot of money. Like ये देखो कि Adani Green has made him 18 billion just in the last 3 months. Adani Power 2 billion. Adani Power supplies you electricity आपके घर में. Adani Transmission जो transmission वाला business है. Adani Enterprises एयरपोर्ट्स वाला, Adani Total Gas LPG, और भी बहुत चीजें होंगी. इसका ना And ये Adani- इसका स्टेलर राइज और ये सब की जगह पे हाउ मच मनी डिड तन्मय मेक, और ये 18 बिलियन को खराब पेंसिल से ऐसा स्क्रैच करके 9 रुपीज, ये स्क्रैच करके 15 रुपीज, ये स्क्रैच करके 35 रुपीज, ऐसे एक बनाना चाहिए और मुझे अपने माथे पे डाल के घूमना चाहिए. Alright, that is this week's episode of Stonks. Thank you so much for watching. If you enjoyed that, then please like दबाओ ताकि और लोगों तक ये episode जाए. Do check us out on Telegram. We are on Telegram now. Telegram link is in the description. आओ join करो. Telegram पे क्या क्या मिलेगा? Telegram link पे click करते ही आपको पता चल जाएगा. So do join us there. Follow us on Instagram. हम finance के बारे में memes बनाते हैं. तो आपके timeline में meme आ जाएंगे जिसके through आपकी knowledge बढ़ेगी. इसमें क्या problem है? Follow us on Instagram. And do leave us a comment about what you would like us to cover next week. Thank you very much for watching Stonks. See you next week.